Okay, so let me record this session now, and this session is about the group task, and I'm going to give you the group task which is asked in HPCL last year and this year also. So there are some 8-10 group tasks, and I think they're already recorded form available. Tomorrow onward, I'm going to give you new topics, right? So let me bring this task on your screen. Here it comes now on your screen, and this task is known as Xerox machine dilemma. Xerox machine dilemma. I want you to read it, and then so you have done it. Okay, so those who have done, they may leave. Otherwise, those who have not done, please read this task. Keep yourself mute and read this task.
Okay, so you've gone through the study task now. You've seen this. Yes, sir. So since it's a small group, I can expect that lot of good discussion will come up, and you will give your ideas. You will give creative thinking. You will read the points very carefully. I'll be sending this task, a photograph of this task in your group also, so that you can see that. And you please start your discussion. At the end, I want really good points from you. So please initiate the task now and go for it. So, Let good me evening, friends. introduce the task Good today, evening, friends. which is I am job for Satyajit. friends. As there is a Xerox machine we have to manufacture today, and Xerox machine color copy should be less than general black and white copy. Manufacturing cost should be less, so that the company's profit should be maximized. Then after what is the manufacturing cost can be decreased by using the low cost components. And this low cost paper is not detected by 70% of the people, and 30% of people are able to detect this. In order to achieve the target of the company, that is maximize the profit, you have to target the 30% population also. As mentioned, 70% is not satisfied. 70% is See, satisfied. So we have two tasks it's a very here. long. Everything, We and are. we have It's to a very So we long have two introduction. tasks here. Please, you have First to is solve reducing the it very. cost of the position. photocopy machine, and second is the cost of photocopying. So we have two tasks. Cost of photocopying, ठीक है, मतलब पैसा कम करना है जो अपन को प्रिंट दे रहे हैं उसका, एंड जो मशीन है उसका कॉस्ट कम करना है. ये दो दो चीजें अपन को करनी है. ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि अपन फोटोकॉपी जो कर रहे हैं उसका पेपर या फिर उसका मटेरियल या इंक जो यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कैसे कम करें ताकि हम अपना प्रॉफिट एनहेंस कर सके. फिर दूसरा अपन डिस्कस करेंगे मशीन जो है, मशीन में ऐसा क्या करें अपन कि उसकी कॉस्ट कम कर सके. और थर्ड ये है कि अपन जो 30% और 70% कस्टमर्स हैं, तो अपन को 30% को टारगेट भी करना है और 70% को भी टारगेट करना है. तो अपन क्या कर सकते हैं कि 30% वाले लोगों के लिए अलग से कैटेगरी रख सकते हैं क्वालिटी की, और 70% वालों के लिए अलग से क्वालिटी रख सकते हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करेंगे अपन. वो वो जो अपन करने के लिए तो यहाँ पे मेंशन सबसे था पहले हमने कि हमें लो कॉस्ट कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट डिग्रेड हो रही है, क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, कॉस्ट भी कम हो रही है. तो लो कॉस्ट कंपोनेंट्स यहाँ पे ये हो गया. लो कॉस्ट कंपोनेंट्स के लिए अपन सेकंड हैंड आइटम्स, सेकंड हैंड या फिर रिसाइकल प्रोडक्ट्स पार्ट्स ले सकते हैं दूसरे मशीन्स के, पुराने वाले मशीन्स के, और फिर उसको यूज कर सकते हैं. See, यहाँ पे एक issue ये है, there is a one issue that if you reduce the cost, then it could causes a quality. So we have to also try to devise new things which enhance its quality as well. And see, there are you can see that there are 70% consumers. There are 70% consumer who do not recognize, who cannot recognize. Definitely, there are 70% consumer who could not recognize that what they are don't have any panicked about quality. You know, so we have to also keep this thing into our mind that we have to target them first. So anyhow, we have to reduce our cost. That should be our prime focus. That's for those 70%. Yes, फ्रेंड्स cost reduce करने के लिए हमें लो कॉस्ट कंपोनेंट यूज करेंगे. मशीन के लिए लो कॉस्ट कंपोनेंट यूज करने के हमारा मशीन का जो कॉस्ट है वो कम होगा, उससे हमारा मार्केट कैप्चर है वो बढ़ेगा. क्योंकि 70% जो पीपल है वो हमारे लो कॉस्ट कंपोनेंट्स को जो डिग्रेड हो रहे हैं, क्वालिटी को वो मतलब कि एनालाइज नहीं कर पा रहे 70% पीपल. तो उससे हमारा मार्केट पर शेयर 70% लोगों तक रीच करेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वालिटी सेंट्रिक बनेंगे. जो को 30% लोगों को भी हम एंगेज कर पाएंगे, क्वालिटी सेंट्रिक बन जाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो हमारा ओवरऑल 100% मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे. क्वालिटी ऑलरेडी कम है तो हम इसके जो हम 30% को टारगेट नहीं कर सकते बिकॉज इसकी क्वालिटी ऑलरेडी डिग्रेड हो रही है. नहीं, पहले हम 70% टारगेट करेंगे. पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने पे फोकस करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और हमें ऑलरेडी मालूम है कि 70% पीपल हमारे प्रोडक्ट को
ठीक मतलब लो उसकी लो कॉस्ट के हिसाब से उसको जज ठीक कर पा उसको रहे हैं कि detect 70 नहीं कर पा रहे हैं। but डिटेक्ट to नहीं कर add पा रहे one more हैं point. उसके बाद में जब हम वो तो Yes, yes. ऑलरेडी I want to add one more 70% point. मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, 70% मार्केट को कैप्चर करने के बाद But- हमें but see, 30% लोग But those 30% के बारे में सोचना चाहिए। 30% consumer will give you more money, because suppose that if a Xerox more machine has money 3,000 they- rupees per piece and the 30% consumer paid 9,000 rupees per machine, then what या तो we should एक have to काम और focus कर also on सकते हैं, them. तो उनको अपन एक हमें ऑप्शन दे machine सकते को हैं हैं कि नहीं, दो machine नहीं हमें quality sell करनी है, हमें ज्यादा कॉपी चाहिए, सेल ऐसा करनी अपन है। कर सकते हैं गाइस। पहले हमें उनको ऑप्शन दे सकते हैं, पहले हमारे प्रोडक्ट के ये सेल्स का बढ़ाना पॉइंट चाहिए अच्छा है, हमें। हमें दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। एक पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाने के बारे में फोकस करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच कर सकें, भले वो I लो am कॉस्ट है। completely agree with you. ज्यादा से ज्यादा अगर हम रीच करने की बात कर रहे हैं, सुनिए, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रीच करने की बात कर रहे हैं तो एक मार्केटिंग में एक लॉन्ग रन में एक ट्रस्ट नाम की चीज होती है। मतलब अगर हम कस्टमर के रीच की बात करें, अगर बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में बात करें, हमने 70% ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि वो जो 30% जो है वो इनसे मिलेंगे ही नहीं। हाँ, वो कभी मिलेंगे, कभी दिखाएंगे, वो बिल्कुल। पूछेंगे कि भाई ये तुमने ये क्यों नहीं लिया, तो वो बात तो करेंगे ना कि क्यों नहीं वो चीजें हुई। तो अभी आप उसके लिए हाँ, दोनों ऑप्शन रखना ठीक है। Definitely, you are right. But in our market, there are various mobile companies. Suppose that 5,000 rupees mobile is also there and Apple phone also there. So we have to. You are basically saying कि हम जो है 30% कस्टमर को भूल जाए। No. 30% customer are important for our revenue purpose. But as a mass, we have to also focus on 70% consumer first. हाँ, We have to take side by side. 70% के लिए हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो वो तो वहां से टारगेट हो रहा है। 30% है, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। फ्रेंड, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल मार्केट में चाइनीज कंपनियां मोबाइल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंडिया में मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जबकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के एप्पल के फोन भी अब मौजूद है। इंडिया में एप्पल की कंपनी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट रीच वो चाइनीज कंपनी के पास है आज भी मोबाइल का। तो क्या वो Definitely, Xiaomi हाँ, is तो number फिर one. फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वालिटी के को तरफ फोकस करेंगे, अपन अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, तो वो 30% पीपल तक भी अपन रीच कर सकते हैं। इससे कंपनी का हमारा लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट जहां होगा। तक मानना, आप चाइनीज कंपनी मोबाइल का एग्जांपल दे रहे हैं, हम इंडियन कंपनी के तरफ भी जाते हैं, इंडियन कंपनी के तरफ भी आते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोमैक्स वगैरह है, ये चली क्यों नहीं? भले ये कीमत कम है, बाद में वो क्वालिटी चीजें, जो क्वालिटी है वो अल्टीमेटली मैटर करने लगते हैं कंज्यूमर को। वो अलग चीज है कि उनका लेबर कॉस्ट अलग है, ये अलग चीज है। वो ये नहीं कि मुझे क्या लग रहा है, देखो, we all agree. शॉप पे तो उसका पर्पस अलग होता है ना। जैसे कि वो चीप ले रहा है, मेरे को पता है, उसको पता है, अपने को पता है कि वो सस्ता वाला ले रहा है, नहीं पता है। लेकिन ये शायद उसको जेरोक्स के लिए, मींस जैसे अपन सेंटर पे जाते हैं, जेरोक्स कॉपी लेके अपना हैंड करता, उसके लिए ले रहा होगा। लेकिन अगर वही ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, उसको फाइल बॉस को सबमिट कर रहा है, तो वो अच्छी क्वालिटी का पेपर लेगा ना। ये डिपेंड ऑन द पर्पस। 70 वाला क्या जरूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग we all are agree that we all are agree that we have to reduce the cost. Yes, we all are agree that we have to reduce the cost. But what are the तरीके बताते हैं, how we can reduce the cost? We have to discuss about it, that how we can reduce the cost. मशीन की कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या करेंगे? 3-4 पॉइंट to that. तो पहले तो रिसाइकल्ड अपन ले सकते हैं, ठीक है। फिर इंडिजिनियस मशीन्स यूज कर सकते हैं। फिर मेक इन इंडिया की तरह जो मशीन्स को अपन प्रोत्साहित कर सकते हैं कि और नई मशीन्स बनाई जाएं अच्छी, ठीक है। और फिर लोकल मार्केट वाली जो मशीन्स हैं उनको ज्यादा अपन वो कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। कंपोनेंट अपन खरीद सकते हैं। I would like to add one point here. if you don't mind, मतलब आप लोग जो बात कर रहे हैं कॉस्ट रिड्यूस करने के, my point is that we can target 100% consumer and we can increase the profit by increasing the sale. I mean, why can't we advertise by I am agree with you, but how we can increase the sale? We can increase the sale by targeting those segment of the price of the machine. How we can increase the हमारे sale? पास फर्स्ट कंडीशन ये है ना कि हमारे जो there are प्रोडक्ट Indian market is very wide.
Indian market is very wide. There are all kinds of consumer. There are some who will buy 5,000 rupees printing machine. There are some who buy 15,000 rupees printing machine, because everyone wants their different capacity. Some wants a machine for their personal use, some want for their commercial use, some want quality, some want quantity. You know, so we have to categorize then on the basis of that. हमें majority people का That will be a great idea. That will be a very great idea to categorize customer, and we have to target them individually. बिल्कुल Yes, बिल्कुल That, यही that करना will be है a very great idea to categorize and target. Yes, that will be a great idea that to categorize and target individually. Yes, we can add categorize. What will be the basis of categories? We will think about that. We can discuss on that, I हाँ guess. तो एक तो अपन ले क्वालिटीज में अपन रख सकते हैं मीडियम क्वालिटी और एक सुप्रीम क्वालिटी, दो तरह की क्वालिटी रख सकते हैं। उस बेसिस पे हम Yes. उसके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को भी अपन मतलब गलत तरह से गुमराह ना करें। मतलब एक बता दें उनको कि भाई ये हाई Yes, क्वालिटी का है, ये honest प्राइस रहेगा advertisement. मीडियम क्वालिटी का। स्केल पे रख सकते हैं Honest जैसे advertisement. We एक हमारी ब्लैक एंड व्हाइट की कॉस्ट होगी एंड एक हमारी कलर्ड में दो कॉस्ट हो सकती है, yes, एक लो कॉस्ट एंड बिल्कुल। एक हाई that will be great. Yes. Yes. very That relevant will point. be a great Very idea. relevant point. Yes. 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 And We color can there could be categorize color customers there and could we be can two target. category. हाँ, कस्टमर्स yes. अपने नीड बोलिए। या पर्पस के अकॉर्डिंग हाई एंड लो में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन उनके पास हमेशा No, we से won't say it high and low. High because as we have seen that calling it some as a low quality is we will name we will say We will categorize in high and economical, low. economy we will and name वर्ड यूज economy and prime. we are- We could also add प्रीमियम एंड some kind of इकोनॉमिक, superior kind. or medium quality. प्रीमियम एंड इकोनॉमिक हम ऐसे कुछ कर सकते हैं। Because Indian Premium people and love economy. economic thing. Okay, Indian people love economic thing, and they will definitely Superior love and this economic, product. right? So I and think I the think naming we can have be not better. yes, and I think we don't have much compromise with quality. There was only some amount of quality will decreases, but the quantity and per unit per page output, that will quite good for low quality machine as well. क्वालिटी के बारे में मैं एक people पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो गाइज क्वालिटी को हम अगर 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया तो फिर क्वालिटी को अपन ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे, जिससे हमारी सेल्स बढ़ेगी। नहीं yes definitely अब we got a अपन को fund, we ये got चीज R&D, फोकस करनी चाहिए। we आप can लोगों also को invest in लोगों R&D. को वो विश्वास एक बढ़ेगा मशीन हमारे पे प्रोडक्ट based है पे, ना अगर क्वालिटी quality की। इनहांस होगी ग्रेजुअली तो लोगों को कॉन्फिडेंस होगा, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास करेंगे लोग। बट हमें एक पर्टिकुलर Yes, मशीन डिजाइन करनी है जिसकी क्वालिटी हमें कम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी हम क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते हैं वरना फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, तो हमें आपको separate एक चीज और option बताओ, मशीन की अगर जगह कॉस्ट को हमको और रिड्यूस नहीं, करना है, if we हमारा want to ओवरऑल reduce the फोकस cost, है कि कंपनी का how we बेनिफिट can- होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट और क्वालिटी हमें सेम ही रखना है। नहीं ओवरऑल जो हमें कंपनी टास्क के दिया हुआ था ना उसमें लिखा हुआ था हमें एक ऐसी है। मशीन मैन्युफैक्चर करनी है जिसकी कॉस्ट ब्लैक एंड व्हाइट से कम हो, तो हमें एक ऐसी मैन्युफैक्चर करनी है मशीन, उस पे हमें फोकस करना था एंड फिर हमें बताना था हाँ कि इससे हमारा राइट, प्रॉफिट राइट, बढ़ेगा या लेकिन- नहीं कंपनी का। राइट, इसके बाद हमें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। ओवरऑल स्केलिंग इज प्रॉफिट के बारे डायरेक्टली में सोचना प्रोपोर्शनल है। टू सेल्स। स्केलिंग जैसे जैसे स्केलिंग होते जाएगा वैसे वैसे हमारे पास फंड आएगा, वी कुड इन्वेस्ट इन R&D and then we could also improve our quality. Yes, It is yes. directly proportional. Both हाँ. things are directly proportional. And we should also adopt some method for in manufacturing practices, which will enhance our labor cost, which will enhance our time. Okay. और Then एक बार particular मार्केट time, सर्वे भी that's कर how we सकते can हैं अपन। increase. एक बार मार्केट सर्वे भी कर सकते हैं और देख सकते हैं जाके क्या क्या मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे कोई मशीन्स तो होंगी ना जो एक पर्टिकुलर प्राइस से कम रख ही नहीं सकती वो प्राइस, तो वो जैसे ऐसी मशीन्स अपन ढूंढेंगे। स्पेशल कंफर्ट जैसा इंपोर्ट करते हैं अपन मशीन में, उसके जगह न्यू प्लेयर जो अपने कंट्री के अंदर ही है उसको इनिशिएटिव देके उसके थ्रू कंपोनेंट डिजाइन करके अपन दे सकते हैं सस्ते कॉस्ट हाँ, पे। उनके कंपोनेंट्स that. देख के आप लोग ले सकते अपने हैं कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे लोकल कंपनी के कंपोनेंट्स जो ज्यादा अच्छे हैं उसको लेकर हम जो कॉस्ट इफेक्टिव रहे हमारे लिए। But friends, I want to add one more point that सिर्फ अपने इंडिया में से लेके और नए प्लेयर को इनिशिएटिव दे सकते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कुछ लेने आता है तो वहां से भी ले सकते हैं अपन। बट आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ा है कि अगर देखिए सेल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स डिपेंड करता है कि जो आपका रिटेलर है वो अपनी मशीन्स को बेचने में एफर्ट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। वी शुड आल्सो इंसेंटिवाइज, वी शुड गिव एन इंसेंटिवाइज टू अवर डीलर्स एंड एज वेल एज रिटेलर्स
wholesaler, Yes. retailers, we have to make some coupon kind of some gift kind of thing for them, so they will get their incentives in per unit sell. It will also increase our sell. मतलब अपने This could be also a very good point for. हाँ तो ये तो सारे चीजें के लिए कर सकते हैं हम लोग। मशीन के लिए पे चीजें जो डिस्कस करते हैं, मशीन हमने डिसाइड करनी है। सेल के लिए तो बहुत सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट है, बैनर्स है, वैसी चीजें हम कर सकते हैं। यस यस बट हाँ ठीक है, चलिए नोट करते Last 2 minutes for you. तो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मैं बोलूं क्या वन बाय वन? Okay, let us Yes. first Sure, summarize, go then ahead. you can conclude it. तो तुम ऐड करिए लास्ट में। गो अहेड। जैसे कि अपने को टारगेट 100% मार्केट करना है, तो उसमें से 70 लोगों का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि दे आर सैटिस्फाइड विद देयर पर्पस एंड विद देयर क्वालिटी। और 30% को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। 30% में भी जिसको प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो विद दैट क्वालिटी। जो क्वालिटी का इशू है, तो आप उनको ये कर सकते हैं, मींस ऑप्शन दे सकते हैं कि एक हायर क्वालिटी का और एक लोअर क्वालिटी का। तो उसके हायर क्वालिटी के हिसाब से विल गिव दैट कलर कॉपी टू। दूसरी बात है कंपोनेंट का, कंपोनेंट्स का कॉस्ट कम करने के लिए, तो वी कैन डिक्रीज द quality of the ink. Then afterwards we can take initiative for new players in the market. जैसे कि कोई स्पेशल कंपोनेंट अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके जगह अपन न्यू प्लेयर को इंट्रोड्यूस करें, तो क्या करेंगे, तो उसको उसका भी डिजाइन स्किल का प्रोत्साहन मिले और अपने पर्पस भी सर्व हो जाए कि कम से कम कॉस्ट अपने को कंपोनेंट मिल जाए। जैसे कि लोकल मार्केट का भी मदद ले सकते हैं, लोकल प्लेयर का भी मदद ले सकते हैं, फिर टोनर का क्वालिटी भी अपन चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ कंपोनेंट उसमें स्पेसिफिक इंक का या फिर कुछ और वो भी अपन चेंज कर सकते हैं, मींस क्वालिटी कम कर सकते हैं, सो दैट कॉस्ट कैन बी इंक्रीज। और R&D टीम को भी अपन ये कर सकते हैं कि टू इम्प्रूव द टू मैक्सिमाइज, मींस उसका क्वालिटी कम करके वही सेम क्वालिटी रिटेन करें, क्वालिटी कम करके वही उतने पैसे में सेम क्वालिटी ये होगा, so that profit can be maximized. Okay. And in sales, sales में कैसा बोले, incentive to the seller अपन दे सकते हैं, so that trust can be continued और उसको भी मुनाफा हो और अपना भी पर्पस सर्व हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पब्लिक के थ्रू। और एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। Okay. That is very relevant. Okay, so friends, I think my friends had my friend had categorized all the relevant point. Now I would like to take opportunity to conclude whole discussion. Yes. I think we have very fruitful discussion and we have reaching at a consensus. Now we have discussed about Xerox machine, that how we can produce it and what kind of machine we have to produce. We have reached a consensus that we have to produce all the three kinds of machine, that is black and white Xerox machine, a color machine with low quality, and a high quality color machine. For in a view to look about our customers, that we have to focus on 70% customer and we also have to focus on 30% customer. So for those 70% customer, we have our low quality colored machine, and for 30% customer we have our high quality Xerox machine. So we could target both the markets, and it would increase our sales, and it will be very easy for us to scale our business. Now we also in business of a black and white copy machine which we produce continuously. So those who wanted to purchase those black and white Xerox machine, they could do that. So it would be very helpful for to increase our profit, that we have to segmentize our market and we have to produce machines in accordance with the nature of our customers. Okay, so we all has reached a consensus that we have to segmentize our market. We have to make a category for each kind of customers, and then accordingly we will produce and fulfill the demand of each kind of customers. Okay, so I think I found your this conclusion quite good, and I mean that you have reached good consensus. And let me give you the feedback first.
So I think you people were talking, you were participating, but you know, typical problem what comes is when you are state of motion, you are in state of motion. When you are in state of rest, you become state in the state of rest. So Newton's, you know, this law is working on you. I give you example, like Vinod was speaking very effectively and then Vinod went silent. He became in a state of inertia and then Vinod was not coming out of that state of inertia. I was feeling like, no, Vinod should now speak and he should, in the state of motion means what? Not speaking. State of motion means you are nodding, you are showing interest to participate, listening and something. So be in state of motion. Don't go in state of rest during your group task. Don't do that. And like you will keep listening to other silently. This is not the way. You should not be like that. You need to be in a high energy state during the task. So you spoke. Now you cannot speak continuously. Now you spoke, and now you are waiting for others to, you know, you are listening others. When you are listening, you should be in state of motion. Now ask yourself, how shall you be in state of motion when you are listening? That is something which I could figure out they wanted, because they want that a person who is sitting there should be in the active mode, who is listening. Clever expressions, you know, you give such expression as if you are understanding, yes, and then the attention of the observer goes to that student who is nodding and who is understanding and who is listening. You are not to see the observer, you are not to see the mediator, you are only to see other members. But when you see other members who is speaking, you need to agree with him, disagree with him, talk to him, listen to him. So that is the state which is required. Practice that. That is the majority of you are not doing that way. You are, when you are speaking, you are in state of motion. When you're not speaking, you are in state of rest. I want you to be in state of motion all the time, whether you are speaking or you're not speaking. And good points also. You people gave some good points which I jotted down. But you know, the best part was like when you people are talking that yes, we need to capture entire market. That any company would like to do that. Second, good point. Every company comes out with a different kind of product as per the cost to cater to the need of customer. How do you define quality? If some of you are mechanical engineers sitting here, they know quality is nothing but the requirement of customer. Quality of the product is the requirement of the customer. If it satisfies the requirement, it is a quality product for customer. I give you example. Suppose my mobile is 5-6,000 rupees and I don't only want to purchase mobile of 5-6,000 rupees. So maybe that mobile of 5-6,000 rupees is a high quality product for me, and maybe iPhone may not be high quality product for me because I don't want that. So it does not mean you produce something costly will have high quality. No, quality is what customer needs. Now you're a college student, you want, you know, colored printout, but you don't want it that very high cost, and you do not want very high you know, coloration of that quality, very high quality. What we are saying quality, we don't want that. We want low quality, that is serving our purpose. So for me, that is a quality. If it fulfills my need, it is quality for me. And if it comes at particular cost which is less than other product, that is quality for me. So let's roll out 4 kind of machine, 3 kind of machines. Black and white machine is there with us. Can we also, now he's suggesting us that you use cheap component and make a cheap machine. Can we also make cheap component wise a cheap machine for black and white? Maybe if there's a need for that. Black and white, good quality or high quality paper is coming 3 rupees per page. Low quality is coming 1 rupee per page. Is there any customer for 1 rupee page? Yes, there is customer. Produce it. Like, you know, you make any automobile company, you see. Automobile company also is coming out with the costly product, cheap product, high-end model, not that costly model. So for every customer, there is a product. So that is another good thing you said. Similarly, color mein 30% customer ke liye bhi do, 70% customer ke liye bhi do. They will take it. Whatever is your need, you take it. So as a manufacturing company, we should come out with this. If you see the task once again, let me share the task with you once again. If you see the task, you will find that yes, the task was not how to make it. Task was, should we make it or not? See the last line. Yes. We need to give a solution for this, whether to reduce the cost of manufacturing and benefit the company or not. That means the question was, should we make
what we are calling low cost component machine or not? Answer is why not? If there's a customer, we should make it. So if you want to do survey, you do it. I mean, are there customers or not? But the reality is there will be customer, because we want lesser. He's already given in the beginning. We should give colored copies, but at the cost of these colored copies should be less than black and white copy. So that means there is a market. But if you want to do survey, you do the survey and create that kind of market. That was the task given to us, right? So task was, should we make it or not? Yes, we should make it, and discussion should be on that line. So he's looking for one good point from you, and that will be done. This is how it is to be given. So you have to speak, and you have to speak something which is really good, whatever points I gave you, and you have to listen to others and participate. This is how group task should be, right? So it's good. I mean, you people are speaking. Shobit, start speaking more. Anchi, start speaking more. And rest, I think you people have spoken. Satyajit was continuously talking. Amitesh was talking. Vinod spoke very well, but then long duration of silence was there. Anchi was trying to enter. Anchi, you still need to practice more. Shobit, I know he talks nicely. Earlier also, I was practicing with Shobit, but now Shobit, there is an inertia in you. You need to come out of that. And Shrikant, you stick to English. Don't speak Hindi. You are good in English speaking, so stick to English. Maybe where is your center, Shrikant? Mumbai. Huh? Mumbai. Bombay, right? Hmm. Then it can be Hindi and English both combination. So Bombay mein Hindi English combination, Lucknow mein only Hindi, Chennai mein only English, Hyderabad mein only English, something like that. You need to be clear, right? So practice that way in the group. So Shrikant, be in the group where Hindi English both is going on, but speak in English if you can. Okay. Right? Anything Sir, request था. ओ 11 अभी वो पीडीएफ आया, उसमें 11 से 15 तक का दिखा नहीं है, तो उसके ऊपर जीडी आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं. आपका ना आपका साउंड इज नॉट कमिंग. आई डोंट नो वेदर आई एम नॉट लिसनिंग और योर साउंड में प्रॉब्लम. सर अभी आ रहा है. वो ये वायरलेस के कारण है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, बीच में भी साउंड इज द इशू. आ रहा है बहुत. सर वो 11 से लेके 15 वाला जीटी है ना, जो पीडीएफ है, तो उसका आप ज्यादा लेते हैं क्या? You are talking about 11 to 15 topic, topic number 11 to 15. GT. You want to work on that? Yes, You want me to work on yes, that? sir. Send me Yes, that. sir. Send me that document. You please send me. Screenshot भेजता हूँ group में. Send me in the group. Any other point? सर विनोद, हाँ, सर विनोद। मैं अभी इम्प्रूवमेंट हुआ या मेरा वही चल रहा है अभी सर? नहीं रेड अच्छा जोन बोला, से अच्छा बोला, Red लेकिन zone। बीच में इनर्शिया नहीं करना है. अच्छा बोला है आज. ये सबसे अच्छा पॉइंट दिया तूने. मोबाइल फोन एग्जांपल जो दे रहा था ना, यस सर, मोबाइल फोन का जो एग्जांपल दिया, महंगा वाला सस्ता वाला, वो अच्छा एग्जांपल था. और लेकिन बीच में फिर वो बोलने का चुप हो गया. Sir, Amitesh here, sir. Yes, Amitesh. Sure, this was my first GD ever. So how did I perform? I want to know Your about first के हिसाब से it was good. From first perspective, it was good. You'll do Okay, sir. good. Thank you for that. Okay, sir. Keep Thank practicing, right? There are certain things you need to keep in mind actually to get Okay, good sir. score and to prevent elimination. If you Okay, sir. keep those things in mind, you can never be eliminated. Moreover, you will get good score also. Oh, sir. Keep those things in mind. Sir, group में That inertia thing or some any other thing, sir? That inertia thing that you were saying, and apart No, from that, yeah, anything, that sir? is the thing. Inertia thing is keep in mind, talk, listen to others, and keep speaking. Okay, sir. Thank you. Yeah, any other question? Any other point from your side? सर मेरा सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा प्रैक्टिस करो, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? You tell me, yeah, English में you participate. और कोई लैगिंग पॉइंट? No, that is what I mean. Common I have given you, right, Shrikant? I told you Yes, common. sir. Other things, the rest is okay. You are participating on regular basis. That is not a problem. सर मेरा एक क्वेश्चन था.
सर मैं चिल्ला तो नहीं रहा था? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगा। मतलब सर इसका ओके सर, शाउटिंग नहीं लग रहा था, इट वाज लुकिंग ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। right? So anyhow, then you keep participating and keep seeing these recordings are also getting uploaded, so do your self assessment also, you'll get your self assessment. तो ग्रुप में डाल दिया, आप देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, okay, I'll check it. चलो, I then take leave of you, right? Okay.